आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के टास्क पे। The assistant to the finance director has prepared a summary of the investment appraisal of the planned development of TT4U's cloud-based services. The chief executive officer has given you a summary of the analysis which has been prepared, as she is unsure whether it is satisfactory. She also wants you to brief the board on how the new services should be e-marketed. Prepare a section of your report which critically evaluates the investment appraisal produced by the finance director's assistant. ओके, इसके अंदर स्केप्टिसिज्म टेस्ट होने वाला है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कैसे दिया है उन्होंने अप्रेजल ना। तो देखो ये तो कुछ नहीं रहेगा, ये क्लाइंट सर्वे, ये बाद में आएगा शायद। ये एग्जिबिट जो है ना, ये देखो, ये अप्रेजल ऑफ क्लाउड सर्विस इन्वेस्टमेंट प्रिपेयर्ड बाय रीसेंट बोर्ड। ठीक है, देखो इसके अंदर कैसे दिया उन्होंने। सेल्स जो है वो, हाँ, वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो रही है। पहला साल सर इन्वेस्टमेंट का साल है, ईयर 0। ठीक है ना। वही डिस्काउंटिंग फैक्टर उन्होंने क्या लिया हुआ है फिर वो देखना पड़ेगा। हाँ, ये देखो उन्होंने नीचे नोट्स भी दिए हुए हैं। ओ भाई, काफी कुछ है, काफी कुछ है, सब पढ़ना पड़ेगा। तब तो नॉर्मल अपने जो रहेगा वैसा सब है। अभी देख लेते हैं। सेल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन मार्केट क्लाइंट्स served and prices. Contribution is assumed to be 55% of revenue each year in line with the current margins. Okay. Marketing costs are assumed to increase in line with sales up to year 3. Tax rate is 25% of pre-tax cash flows. Terminal value represents assumed reasonable value of services are no longer viable after 4 years. Terminal value, उसको बेचने की वैल्यू। अच्छा, discount factor of 6% is is after tax interest rate on current long term loans as the project is to be financed by a long term loan। देखो अगर वो चीज लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर है, ठीक है, years 5 to 10 figure is post tax discounted cash flow of year 3 multiplied by 6। ओके, years 5 to 6 कहाँ पे है लेकिन। अच्छा, ये हाँ हाँ हाँ। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 6 अगर हम लोग करेंगे तो अगर मैं ईयर 4 को सिर्फ मल्टीप्लाई करूंगा तो है क्या ये। हाँ, अगर मैं ईयर 4 के वैल्यू को सिर्फ अगर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 30,000 आता है। नहीं, ये वैसा भी नहीं है। क्या है फिर, ये 23,000 कैसे मिला उनको। अच्छा, इन्होंने सबसे पहले 30,000, जैसे मैं इन्होंने क्या किया 5,127 को 6 से मल्टीप्लाई किया जैसे इन्होंने यहाँ पे किया है, और फिर उसको किया डिस्काउंट। ओके, पे बैक कैलकुलेशन, कैश फ्लोज जो है वो 10,000, 21,579। ठीक है, क्यूमुलेटिव देखा उन्होंने। ठीक है, कमेंट्स, द प्रोजेक्ट शोज अ पॉजिटिव प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर 4 years and a much greater present value if services can be offered in their current form beyond 4 years. The payback period is slightly greater and than the target set by the directors, which suggests that the project should be rejected. Nevertheless, the sensitivity analysis carried by should be carried out to determine the probability of loss and hence whether the project should be undertaken in its current form। ठीक है, तो करंटली जो है इन्होंने खाली पे बैक और ये एनपीवी के ऊपर ज्यादा फोकस किया हुआ है। दे शुड सीरियसली कंसिडर कैरिंग आउट सेंसिटिविटी एनालिसिस, वो डिसीजन ट्री एनालिसिस, सिमुलेशन सिमुलेशन सिमुलेशन, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने ग्रीन का प्रेजेंट वैल्यू पे कैलकुलेट कैसे किया वो अपन बता देंगे। सेकेंडली, ये जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन निकाला है, वो कंट्रीब्यूशन आई थिंक इट इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन नेचर बिकॉज वी आर अज्यूमिंग कि 55% ही होगा। हाउएवर
The suppliers, once they get the bargaining power in their hands, what will happen is they will charge us extra prices for the same. ये suppliers पता नहीं इतना एक्चुअली ना, पता है क्या ये देखना चाहिए, जो कंट्रीब्यूशन है ना उसके बारे में हमें ये देखना चाहिए कि whether this contribution is surely in line with the current margins. However, future costs that we are going to incur should also be taken into consideration, and also the fact that what is the industry average currently prevailing in the market. That is, how much contributions are our other competitors making on the cloud services, investments made by them, or on the cloud services provided by them. ये हम बोल सकते हैं. Marketing costs are assumed to increase in line with sales up to year 3. This can be a strategy which the company is applying, that is to currently incur low marketing costs, and as the growth begins, continuously increase the marketing cost so as to still keep their presence available in the market. However, this is not a marketing strategy which all companies use. Generally, companies prefer the strategy of marketing at a very high pace in the initial stages of the business, and once the name has been made in the market, or the once the name has been generated in the market, to reduce the marketing costs steadily. Because of this, they have already created presence in the market, and thus there are already sales, or there are currently clients available with them through which they can carry out their business. ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ. Tax rate is just 25% of pre-tax cash flows, which is normal. इसके ऊपर क्या बोलूँ मैं, टैक्स रेट के ऊपर कुछ बोलना चाहिए क्या? हम्म, ठीक है ना, टैक्स रेट तो टैक्स रेट है. मैं ये बोलूंगा कि आगे चल के टैक्सेस बढ़ने वाले की कम होने वाले, ये भी आई डोंट थिंक ये इतना मुझे डिटेल में जाने की जरूरत है. Currently the tax rate uses 25% of the pre-tax cash flows. However, as and when the years change, uh, actually, you know what, मैं ऐसा नहीं लिखना चाहता हूँ. Currently, the appraisal of investment prepared of cloud services investment prepared by recently appointed assistant by financial director looks, if certain mistakes are ignored, then looks quite okay. Or if certain mistakes are ignored and certain assumptions are changed, then looks quite okay. However, as the years keep on moving, the investment appraisal should be flexed as per the changes that take place in the market environment, such as there could be a change in the taxes paid, or in the taxation rate itself in the market. ये अपन बोल सकते हैं. उसके बाद टर्मिनल वैल्यू रिप्रेजेंट अज्यूम रियलाइजेबल वैल्यू. तो ये जो हमने अज्यूम रियलाइजेबल वैल्यू वो निकाली है, वो हमने कौन से बेसिस पे निकाली है, क्या, और वो मतलब क्या है उसका, कौन से बेसिस पे निकाली, हाँ भाई, कौन से बेसिस पे निकाली है, और क्या हो सकता है बस. डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 6% इज आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट रेट ऑन करंट लॉन्ग टर्म लोन्स. पता नहीं यार, मेरे को रेट ना थोड़ा जम नहीं रहा है. आई डोंट नो मतलब what are the basis of considering the 6% after tax interest rate? Because because the invest हाँ सी बिकॉज एक है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत ही नए बिजनेस मॉडल के ऊपर जा रही है. सो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स के ऊपर खर्चा बढ़ेगा. सॉरी, शेयर होल्डर्स विल बी अ लिटिल स्केप्टिकल अबाउट दिस न्यू प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह. सेकेंड थिंग, दे शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. ठीक है ना, हम लोग डायरेक्टली बिजनेस से आगे बढ़ेंगे वो ठीक है, लेकिन शेयर होल्डर, क्या हमने शेयर होल्डर को अंडर कॉन्फिडेंस लिया हुआ है रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट और नॉट, दैट शुड बी कंसिडर्ड. ये अपन एक बोल सकते हैं. आफ्टर दैट और क्या बोल सकते हैं हम लोग. रेट रेट के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या बोलना चाहिए रेट के ऊपर. एक तो है कि कौन से अजम्पशंस लगा के इन्होंने ये रेट को निकाला है 6% के. ठीक है ना, वही बोल सकता हूँ. After years 5, extrapolation should be done upon the assumptions and the figures that have been taken into consideration.
for which year 5 and 10 figures is post discounted cash flow for year 4 multiplied by 6 and that figure has been discounted. तो अगर हम 6% अभी तो कैसे निकालेंगे यार ये। अच्छा इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया वो भी अगर बताना रहेगा तो मतलब मैं बता सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1.06 होगा, 1.06 इंटू, तो पहले साल में 1/1.06 किया हुआ है, नेक्स्ट ईयर में 1/1/1.06 इंटू 1.06 ऐसा किया हुआ है। तो ऐसा मैं करते जाऊंगा, 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06, तो 1.338225, 1.338 डिवाइड बाई 1.338225, ये मैं करूंगा मुझे आएगा 0.747। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आया था मुझे, ओ फक, मुझे उस टाइम पे कितना आया था, 30,000 कुछ तो आया था ना, 30,000 के आसपास ही मैं कुछ तो आया था, 30,000। मतलब अगर मैं 5127 को इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे कितना आएगा, 30,600 कुछ तो आएगा ना। चलो, इंटू 30,000, सॉरी सॉरी 30,600, तो वो आता है 22,800 के आसपास। अच्छा इनको आ रहा है 23,632। थोड़ा आई थिंक वो मैंने कैरी फॉरवर्ड्स किए होंगे ना बहुत सारे, इसके वजह से शायद चेंजेस बहुत हो सकता है, बट ठीक है, मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी नहीं है, वो उन्होंने निकाली हुई है ऑलरेडी। पे बैक पीरियड ना ये इनका ज्यादा आ रहा है ना, पे बैक पीरियड। क्या कर सकते हैं, पे बैक पीरियड ज्यादा आ रहा है तो कितना था इनका, पे बैक पीरियड का सम कितना था वो इन्होंने बताया ही नहीं था, पता है, ये मुझे बस जानना है। 3 था शायद, क्योंकि मैंने कहीं पर तो पढ़ा था, लेकिन वो सोल्यूशन में पढ़ा था कि क्वेश्चन में मुझे बस वो याद नहीं है। तो अभी ये मेरे इवैल्यूएशन स्किल्स थे भाई, इतना मैंने इवैल्यूएट किया इस चीज को, भी और क्या कर सकता हूँ मैं इसमें इवैल्यूएट। ब, 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 ब. It should be noted that the investment that has been done is only done in year zero. However, a project might require further investments in the upcoming years as well, or certain cash injections that should also be taken into consideration before moving forward. So the positive present value, just because a project shows positive present value after 4 years and a much greater present value if the services are offered in the current years from beyond 4 years, that does not determine that the project is investable, because because there can be certain other projects which the company can prefer and which would lead to opportunity cost building. That is, if there is a better project available which the company is not considering or is mistaking to consider, then this might lead to problems for the company. Thus, proper analysis and thus proper analysis should be done before entering into any project, अपन बोल सकते हैं। when we look at the current scenario, अभी ये मेरा conclusion है ना, कि if when we look at the current scenario we can see that the project has a positive NPV and a much greater present value, वो वाला copy paste करेंगे line, the payback period though is not satisfactory to the board of direct to the directors, but still is only a slightly greater than the target set by the directors, so this project can be considered. Nevertheless, sensitive analysis should be carried out to determine the probability of loss. Nevertheless, the sensitivity analysis should be, an investment in this project can be done. However, the presence of other possible investable projects should also be carried out. ये अपन बोल देंगे, ये हमारा कंक्लूजन होगा। मुझे पता नहीं मैंने कितना सही बोला है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैंने एक नई चीज ये चालू की है कि मैं सबसे पहले यहाँ पे आके बोलता हूँ, एंड देन आई ऑल्सो ये गो टू माई वर्ड एंड जस्ट टाइप दैट आंसर आउट। तो मैं अभी जाऊंगा वो टाइप करने के लिए, ठीक है। देखो मैंने आंसर लिखा है, मुझे पता है मैंने क्या लिखा है। तो मैंने जितना भी लिखा है 18 मिनट के अंदर लिखा है। तो अभी देखते हैं इनसे कितना सिमिलर है, ठीक है। लेट्स सी।
मैंने जो पॉइंट बताए मैंने वही लिखे हैं, उससे भी थोड़े कम ही मैं लिख पाया हूँ टाइम 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 लिमिट के अंदर। तो चेक करते हैं। इन दिस सेक्शन एग्जामाइज इश्यूज कनेक्टेड विद द समरी which has been prepared and recommends improvements in areas where further detail is required। तो देखो एक्सट्रैक्ट्स ऑन जब रिपोर्ट पूछते हैं ना, तो अपने को ये रिपोर्ट का फॉर्मेट नहीं बनाना है। मैंने ये रिपोर्ट का फॉर्मेट बना दिया, तो शायद उसमें मेरा टाइम चला गया, इफ आई वुड से लाइक दैट। We are the net present value calculation. Sales. Having a single sales revenue figure, even if this is a summary, is quite inadequate. And the comment about drivers of sale arise in increases is unhelpful. There is no justification for varying percentage of sales increase, splitting the figure down by the services offered at the minimum, distinguishing the revenue from the provision of private cloud services from integration services will give a better picture of how increasing the services offered may lead to revenue increases over time. The assumption about increased client base needs to be linked on how new services are being marketed and how much the focus will be on winning new clients as opposed to selling additional services to the current clients. TT4U is operating in a very competitive market for cloud services, so any assumptions about being able to increase prices are doubtful. ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है, हाँ इन्होंने इंक्रीज प्राइसेस लिखा है, तो वो मेरे को लाइन वो लिखनी चाहिए थी कि एक्चुअली ये लोग एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सस्टेन करते हैं, तो उस टाइम पे ये लोग कैसे बोल रहे हैं कि प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, है ना। दैट लाइन इज क्वाइट 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 सेक्सी, ऐसा मेरे को लगता है। ये कौन से पेज पे है? 182 ना, तो 180 दो ऑपरेटिंग इन कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर यू। OTT for operating in a competitive market, so any assumption about able to price increase is doubtful। तो मैंने अपने आंसर में भी ये मतलब नोट्स में ये मार्क कर लिया। अभी आगे बढ़ते हैं कंट्रीब्यूशन। मैंने लिखा था कि ये बहुत ही ओवर ऑप्टिमिस्टिक फिगर है कंट्रीब्यूशन को लेके। इफ डिफरेंट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड कंट्रीब्यूशन में वैरी ऑन देम, अ फिगर में चोजन to may sorry a figure chosen may do as a broad estimate if it is the sort of margin which TT4U has been generating recently. However, there is no detail about variable costs. These may change over time as the service offered becomes more mature and the client and the cost per client for providing each service falls. Okay. ओके ओके, मतलब आगे चल के मैं इकोनॉमिक स्केल भी अचीव कर सकता हूँ, ऐसे बोलना चाहते हैं। मैंने लिखा था contribution which is assumed to be 55% each year in line with the current margins. It should be very optimistic. The contribution to sales ratio should be taken from the industry average or what our competitors are currently using. मुझे इकोनॉमी ऑफ स्केल के बारे में लिखना चाहिए था। एंड देर इज मुझे वो लाइन लिखनी चाहिए थी, बताया कि देर इज नो डिटेल अबाउट वेरिएबल कॉस्ट। वो देर इज नो डिटेल अबाउट वेरिएबल कॉस्ट इज अ वेरी नाइस लाइन यार, वो मैंने क्यों नहीं लिखी। आगे अदर कॉस्ट, द मार्केटिंग कॉस्ट will depend on when the new services are introduced. If they are introduced gradually over the 3-year period, the estimates may be reasonable. However, if most of the services are being introduced soon, marketing is likely to peak in year one. The fixed cost figure appears to be general estimate. No justification is given as to why the figure is unchanged over time. In addition, the figure is sufficiently large to need breaking down to different elements and clarifying the assumptions for each। पता है मुझे ये लिखना चाहिए था, मुझे हर एक चीज के बारे में लिखना ही है ना कभी ना कभी, तो मुझे ये लिखना चाहिए था कि फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर ब्रेकअप क्या है, ये फिक्स्ड कॉस्ट इतना फिक्स्ड कॉस्ट क्यों है, ठीक है, वो लिखना चाहिए था। मैंने मार्केटिंग के बारे में मुझे मैंने फिर भी ठीक ठाक लिखा है। मैंने बताया क्या लिखा कि ये जो है ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन्होंने अडॉप्ट की है। हाउएवर कंपनीज यूजुअली क्या अडॉप्ट करते हैं कि वो लोग पहले साल में बहुत ज्यादा इनिशियल मार्केटिंग करते हैं। So marketing strategy adopted, which is adopted by TT4U, should be revised as during the growth stage of the investment, putting more money in the form of marketing cost will not be available, as at that stage word of mouth is at a higher level। तो मैंने वैसा लिखा था, पता नहीं, आई थॉट कि वो सही था। आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग कॉस्ट बनाते हैं टैक्स, और अभी ये देखो यार मुझे लगा था कि टैक्स और
मुझे लगा था कि वर्किंग कैपिटल के बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट वो लिखना चाहिए, क्योंकि एनपीवी के कैलकुलेशन टाइम पे यूजुअली वो पॉइंट्स आते हैं। बट मैंने टैक्स और वर्किंग कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा यार, मतलब आई जस्ट थॉट कि मैं मेरे को पॉइंट्स आए ही नहीं। यूजिंग द करंट टैक्स रेट इज रीजनेबल assumption if it is not expected to change। पता है ये वाला पॉइंट काफी बेसिक है कि करंट टैक्स रेट है, ये एक्सपेक्ट ये मैंने ये शायद ये पॉइंट बोला था कि द फ्यूचर बजट्स नीड टू बी फ्लेक्स्ड इफ द टैक्स परसेंटेज इज गेट्स चेंज। मुझे ये मैंने पॉइंट बोला था, बट मैं लिखा नहीं, क्योंकि एक तो था कि वो टाइम प्रेशर था, एंड मेरे को लगा कि मैं भूल जाऊंगा, नहीं यार वो मुझे लगा था कि वो पॉइंट इतना वैलिड भी नहीं है। However, the figure does not take into account any allowances which may be available for the investment expenditure. It would also be likely that the investment would require some working capital, as this needs to be brought into the calculation. For the investment, if services are likely to be developed over the next 4 years, then a single immediate figure of for investment at the start of the year। अरे बहन चोद, ये भी मैंने पॉइंट बोला था यार। मैंने ये भी पॉइंट बोला था कि जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है वो शायद आगे चल के हमें और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये भी पॉइंट मैंने नहीं लिखा है। The reasonable value given at the year 4 lacks justification। द रियलाइजेबल वैल्यू, हाँ ये वाला। एक्चुअली ये मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं नीचे के पॉइंट्स लिख रहा था, सो एक्चुअली मेरे को टाइम प्रेशर था। द थिंग इज कि मैं ना हर चीज के लिए, द थिंग इज मेरे को एक्चुअली इस आंसर के लिए लेने चाहिए थे 21 मिनट्स या ऐसा कुछ, तो कि मतलब 1.8 ना, रुक जाओ, 1.8 डिवाइड बाय 12, मुझे लेने चाहिए थे 22 मिनट्स। मैंने इसके लिए खाली 18 मिनट, तो मैं ज्यादा पॉइंट्स कवर नहीं कर पाया इस केस में। नॉट गिविंग एनी एक्सक्यूजेस, मैं इसमें टाइम एक्चुअली कम ले रहा हूँ अपने लिए ना ऐसा। It is difficult to see what would be realized and whether it would have it is difficult to see what would be realized and whether it would have any value given the fast changing nature of the industry. If the net present value figure is extended to year 10, the realizable value should be excluded from the calculation as the investment is not finishing at year 4. Taking the post-tax cash flow at year 4 and using a multiple of 6 as the basis for years 5, 10 has not been justified. The figure used should be discounted at a relevant discount factor for each year, not discount factor for year 4. It is ultimately, however, questionable whether the investment should be extended to 10 years. Oh, sorry, मैंने ये ओपन ही नहीं किया था। I'm so sorry, I'm so sorry. मैं यहाँ पे मेरे नोट से पढ़ रहा था। The figure used should be discounted at the relevant discount factor for each year, not discount factor for year 4. It is ultimately, however, questionable whether the investment should be extended to 10 years, as this seems to be a long period for investment in fast changing IT। तो आई थिंक ये मैंने फिर भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। However, I written this is the fact कि इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने लिखा है कि इसको एक्सट्रापोलेट करना चाहिए था अगर ये 5 years के बियॉन्ड जा रहा है तो। डिस्काउंट रेट इज discount rate used is incorrect। The weighted average cost of capital should be used if business and financial risk remains at the same level. This is likely to be higher than the cost of debt. Since the equity has a higher cost of debt, meaning that the net present value is smaller, if either risk changes significantly, the project specific cost of capital should be used। तो मैंने पता है इसको कैसे लिखा, देखो, द डिस्काउंट फैक्टर विच इज कैलकुलेटेड टू बी 6% इज आफ्टर tax interest rate on current long term loans can be appropriate। However, it does not have seemed to taken into consideration the idea of shareholders investing in a riskier business। Thus if the shareholders were informed that the discount factor used would have been different that the discount factor used would have been, if the shareholders were informed, then the discount factor used would have been different than what it currently has been used। This is, अब मुझे इसमें higher लिखना चाहिए था। The discount factor which would have been used would have been higher ऐसा। As this project is to be financed by a long-term loan, if the company is liquid in the future, then during the liquidation of the company, this long-term loan will be paid before the shareholders, and this is a risk that will be taking that they will be taking if they have their money। मैंने ना दे वो लिख दिया हुआ है। This is a risk that shareholders will be taking if they have their money still invested in the company, ऐसा मुझे लिखना चाहिए था। And the discount factor will be higher, मुझे वो लिखना चाहिए कि the discount factor will be higher। ये वर्ड्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है।
एक मिनट ठीक है। और क्या था? ठीक है, ये डिस्काउंट रेट के बारे में मैं ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ, इट लाइकली टू बी हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट सिंस इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेट मीनिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू विल बी स्मॉलर है, ऐसा लिख देगा। उसके बाद पे बैक पीरियड तो मैं इसके बाद मैं कुछ चीजें ज्यादा लिख नहीं पाया, मैं डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच गया था एक्चुअली। देखोगे तो मैं कहाँ गया ये, यहाँ तक लिखा, फिर मैंने ये लाइन मैंने कॉपी पे नहीं, एक्सट्रापोलेशन के बारे में मैंने फिर लिखा। फिर मैंने एनपीवी और वो इसके बारे में मैं वो लिख नहीं पाया बिकॉज ऑफ वो टाइम कंस्ट्रेंट, बट अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा पे बैक पीरियड कैलकुलेशन और सेंसिटिव एनालिसिस। The approach taken to calculate payback period is correct, although the figures may not be reliable due to the concerns raised above. The net present value is theoretically the best method to determine whether an investment should be undertaken. However, payback can be used as an initial indication of the directors are uncertain about the time frame over which the investment will be profitable and want to ensure it is recouped quickly. Okay, wait. ये क्या है? Having theoretical the best method to determine whether an investment should be undertaken. However, payback can be used as an initial indication of directors are uncertain about the time frame over which the investment will be profitable and want to ensure it is recouped quickly. The investment is only marginally outside the payback period and necessarily be rejected because it fails to meet the ओके, तो पेबैक के हिसाब से तो हमको इसको कंसिडर करना ही नहीं चाहिए था। ओके। Whereas sensitivity analysis, the summary is incorrect as sorry, the summary is incorrect in saying that sensitivity analysis will show the probability of making a loss. It will just show the amount by which the figures need to change for the investment to make a loss. Sensitivity analysis also treats individual figures as independent variables, whereas there may be connections between them. For example, between revenue and marketing expenditure, or same some factors affect may affect more than one variable. For example, the competitor response affecting income from more than one service. Scenario analysis showing results under different optimistic, pessimistic outcomes एक्चुअली मोर वैल्यूएबल। तो ये एक्चुअली हमको लिखना चाहिए, ये मैंने बोला भी था यार कि वो डिसीजन ट्री एनालिसिस, मैंने सिनेरियो प्लानिंग नहीं बोला था, मैंने सिमुलेशन बोला था, वो सब मैंने बोला था। तो वो सब है यार, इसके अंदर मैंने वो भी नहीं लिखा। As a conclusion, the project's failure to meet the payback period should not be itself lead to project being rejected. The decision should be primarily based on revised NPV calculation using the correct cost of capital and reconsidering the assumptions. If the revised NPV calculations with a positive present value for 1 to 4, only the board should consider accepting the project. तो मैंने ऐसा लिखा है मैंने पता है क्या लिखा है, मैंने ऐसे लिखा है कि वो ये वाला मुझे लगता है मैंने फिर भी ठीक ठीक ही लिखा है कि प्रोजेक्ट फिलहाल तो पॉजिटिव एनपीवी दिखा रहा है, सो इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड, but the company should not hurry into the investment as there can be other projects mutually exclusive to this that can be considered as there can be opportunity cost which will be attached to the same। ये मैंने लिखा हुआ है। ये मुझे पता नहीं इतना सब सही है कि नहीं है, मुझे लगता है मैंने ओवर एंड ऑल ना काफी वेग और पता नहीं मेरे को, मैं पता है जब जब तक आंसर एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं होता या कुछ कुछ नहीं सेम नहीं होता ना, मैं उतना खुश नहीं होता हूँ अपने आंसर के साथ। ये मेरे को थोड़ा ना सही नहीं लगा। मैं 12 में से इसको कितने में 6, मैं 5 ही दूंगा इसको, मुझे ऐसा लगता है। ये टास्क 1, नहीं सॉरी ये नहीं टास्क 2 ना, हाँ ये रहा, तो मैं खाली 12 ही दूंगा। अपन अभी बढ़ते सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर यार। Prepare briefing notes for the next board meeting which recommend how e-marketing can be used to attract and retain clients for TT4U's new cloud-based services. Okay, briefing notes बनाने हैं for this। ऐसे लिख देंगे कि as we all know that currently TT4 is considering the new cloud-based services. One of the important factors for these services is the retention of the is that attracting new clients and retaining the current clients.
getting the current clients and attracting new clients. For this, company is currently considering this the e-marketing service. उसके बाद अभी हाँ मार्केटिंग के बारे में मुझे खुद से लिखना है क्या? Now I consider the issues raised by the recent plan survey. I much regret this survey. Intended to move adopting Mobid. Mobid में क्या था? Mobid में कुछ नहीं था. Mobid में Mobid. This is extract of results of client survey. ना, this is client. This was client survey. Service provision. Service provision flexibility. Good when the first started advising us, but now we just seem to think the basic service. ये इनका client survey है सिर्फ. This is just client survey. ये मार्केटिंग खुद से लिखना है क्या? I also want to look at the TT4U structure as a whole. I think we ought to be much of a metrics organization which should result in better communication and mutual learning. I certainly agree internal communication could be improved. I know staff are told not to sit at the same desk each day, but to sit at different desks next to different people. However, we want the three teams in the same areas each day. We all know the three teams sit in the same areas each day, separate from each other. We have our intranet, but the lack of contributions from staff is so embarrassing. Lack of contribution from staff is on it is embarrassing. I think we need to go much further than having one-off client services. We need to be considering the current site of relationships with clients as agenda. यही यार ये भी this is not e-marketing. E-marketing मुझे खुद से ही लिखना है. भाइयों ई-मार्केट में मेरे को सब खुद से ही लिखना है क्या? भाई ये क्या है भाई? खुद से भाई कुछ दिया ही नहीं है एक्स्ट्रा भाई मार्केटिंग के बारे में तो सब खुद से ही लिखना है. ये ई मार्केटिंग की तारीफ करनी है. You know, the next board meeting which recommend how e-marketing can be used to attract retain clients develop new cloud-based services. So this सबसे पहली बात तो what is important the concept of marketing. पहले marketing क्या होता है बता देंगे. Marketing in simple terms means advertising the product or the service which the company is going to offer so much that it can attract and read attract the clients attract new clients into the business. So as to attract new clients into the business, the marketing campaigns include various kinds of campaigns. The marketing campaigns in one of the marketing strategies is the e-marketing strategy, that is marketing through online websites, uh, social medias, on online marketing, etc. Now, what are the benefits of e-marketing? One of the benefits of e-marketing is that the costs which are involved in online marketing are much lower than involved in the physical form marketing or the other forms of marketing. ऐसा लिख देंगे. Um, Because of e-marketing, a presence in the minds of the customers can be made through which the customers will get or the clients will get an idea that that this particular country, sorry, this particular company is offering the cloud-based based services. The more better the e-marketing, uh, the more clients will be attracted towards us, or the better looking or that sorry this includes creating an attractive site, having an attractive marketing team. मतलब basically नहीं ऐसे नहीं. अट्रैक्टिव मार्केटिंग टीम कैसे बोल सकता हूँ मैं? अट्रैक्टिव मार्केटिंग साइट ठीक है. डिस्प्लेइंग गुड कस्टमर फीडबैक्स, ये अपन लिख सकते हैं.
और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? रिकमेंड द बोर्ड हाउ ई मार्केटिंग कैन बी यूज टू अट्रैक्ट throughout the industry. E-marketing is used in such activities. ये अपन बोल देंगे e-marketing is used in order to attract and retain clients, and if we do not act fast, or if we do not act quickly or respond to this quickly, then we will lose out on the competitive advantage, and we'll lose out on the benefit of attracting and retaining attracting new clients, and also retaining our own clients. This will help us to create a market space, build companies reputation. ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? हम कंपनी को फीडबैक देंगे तो कस्टमर्स वहां से आएंगे। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है दोस्तों? और क्या हो सकता है? हम्म। हम्म। नहीं यार, ये मेरे को पूरे इसमें ना कहीं मिला ही नहीं है, पता है ये। थ्रू आउट थिंग मेरे को मिला ही नहीं है कहीं मार्केटिंग के बारे में। When we are me marketing the product, the benefits of obtaining without our experience of operating in this technology based sector should also be advised, ये सब बोल देंगे। ठीक है ना? ये मैं क्या कर कॉपी कर लेता हूँ। ये मैं इसको पेस्ट करने वाला हूँ अभी बहुत जल्द, ठीक है ना? तो अभी मैं ये इतना जो मैंने किया किया डिस्कस, मुझे इसके आगे कोई खासे पॉइंट्स तो आ नहीं रहे। एक काम करता हूँ, मैं पहले इस आंसर को लिख देता हूँ, एंड देन वील रीड। अगर ये मतलब मैंने आंसर जो लिखा है ये बेटर है कि नहीं है, वो अपन बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है? चेक करते हैं, चलो। तो दोस्तों देखो, मैंने आंसर लिखा ये वाला, ठीक है ना? मैंने आंसर लिखा, मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स अपने और ऐड किए, और लिखते लिखते मैं बस लिखते जाता, क्योंकि मेरे पास शायद ना वैसे 5 मिनट एक्स्ट्रा रह गए थे, जब मेरे सारे पॉइंट्स मेरे माइंड के खत्म हो गए, तो मैं बस लिखते बैठा, कुछ भी मैंने लिखा 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 लिखा। और मुझे लगता है मैंने ठीक लिखा है, मतलब ऐसा मैंने कोई एकदम ही क्रेजी आंसर नहीं लिखा है, मतलब मैंने ठीक लिखा है। तो ये मेरा आंसर है, तुम लोग स्क्रीनशॉट या फिर पॉज करके वीडियो पढ़ लेना। और ये नीचे लास्ट का सेकंड पार्ट है, तो ये पढ़ लेना अगर पढ़ने का मन हो तो। और वरना तो मैं यहाँ से इनका आंसर पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? देखते हैं। देखो, ई मार्केटिंग एंड क्लाउड कंपनी सर्विस, द पर्पस ऑफ these notes is to discuss ways in which e-marketing can be used to promote the new services. The notes will be a combination of new ideas and methods which TT4U is already using, but should review, and many need to enhance. The notes also show how the methods should be used within a framework of attracting and retaining clients. Okay, तो इन्होंने ऐसे दो सेक्शंस बनाया, रिटेनिंग क्लाइंट्स और गेनिंग क्लाइंट्स। मैंने वैसे नहीं किया, मैंने एक्चुअली बहुत ऐसे वेग, मतलब मैं बस आंसर पैराग्राफ फॉर्म में बस मतलब वो लिखते बैठा था यार, ऐसा हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं। अट्रैक्टिंग क्लाइंट्स, रीचिंग पोटेंशियल क्लाइंट्स, TT4U may look at whether its search engine position needs to be improved. Possibly the launch of new services is the time to make use of more and more use of methods such as banner advertising. TT4U needs to consider the branding messages, and advertising will promote possibly separately branding the new services from the existing services. ओ, ये अच्छा पॉइंट है कि हमें जो हमारे न्यू सर्विसेज है उनको सेपरेटली ब्रांडिंग करना चाहिए देन अवर करंट सर्विसेज। ये अच्छा पॉइंट है। interesting potential clients interesting potential clients, TT4U should look to make the most of the methods such as tweeting or Facebook pages or promote interest in the new service. ये मुझे सोशल मैंने सोशल मीडिया बोला था, लेकिन मेरे को और थोड़ा इसमें डिटेल फेसबुक पर बोलना चाहिए था शायद। सोशल मीडिया पोस्टिंग्स could cover concerns clients have, for example about the, अरे मैंने वो फीडबैक का पॉइंट नहीं लिखा, मैंने डिस्कस भी किया था, फीडबैक का पॉइंट नहीं लिखा। Sorry. For example, about the lack of connectivity between data holdings, which TT4U new services will address. Social media can also promote TT4U's expertise of providing opinions or guidance from the director or employee. क्या मैं इसमें celebrity advertising लिख सकता हूँ?
maybe देखते हैं. The information about the new services on TT4U's website needs to indicate clearly the ways TT4U services will provide maximization of value for clients and the unique selling points which TT4U services have. It needs to show clearly that it is addressing what is the interest of potential clients by, for example, providing answers to frequently asked questions about cloud services. Infrastructure issues should be regarded as priority, as the ability to search the site easily can help keep users interested and prompt them to revisit the website. ठीक है. मैंने इसको लिखा था ऐसे अट्रैक्टिव साइट होनी चाहिए, मैंने ऐसा इनको लिखा था. TT4U then needs to make sure it makes maximum number of data it has about website visitors to develop its website continuously. The pattern of clicks will help establish the pattern of clicks will help establish what particularly interests the different visitors. Questionnaires about what visitors are in. Arey, questionnaires, bhai, questionnaires of what visitors are interested in can be used to see how to develop content further. For example, in greater emphasis on data management and hosting. ये वाला point बहुत अच्छा था यार, मैंने ये वाला नहीं लिखा. Gaining potential clients. Turning users into clients needs to be focused on using their data about what they are interested in to attract them to the services offered. A personalized approach focused on opt-in emails and text messages tailored. ये मैंने लिखा है. Mails और ये सब वो सब ये मैंने लिखा है. Tailored to what is of interest to clients is core. These messages need to encourage two-way communication. Not only will that interest clients more, but it will highlight the proactive and collaborative attitudes which the new business approach will be promoting. ठीक है. TT4U can use media releases to target particular groups. For example, clients using certain cloud services, while these are less tailored, they can be used to create interest. They can be followed up by tailored communications to individual clients subsequently. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. ये टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए. सेकेंडली इट विल हाईलाइट प्रोडक्टिव एंड कोलैबोरेटिव. सबसे पहले तो हमें मेल्स और मैसेजेस भेजने चाहिए, बट इट शुड बी टू वे कम्युनिकेशन. मैंने पता है कैसे लिखा है इस चीज को, ऐसे लिखा है कि ये देखो, constant pings from TT4U's e-marketing strategy in the form of notifications or emails will be looked upon as a spam, and so it should be considered that a boundary between over marketing and under marketing is drawn appropriately. I think इस पर को थोड़ा और मेरे को एक्सटेंड करना चाहिए था, ये वाला थोड़ा मैंने कम बोला. फिर आते हैं रिटेनिंग क्लाइंट्स. इसके ऊपर क्या है, द सेम एम्फसाइजेस on personalized communication needs to be used for current clients. The focus needs to be on continuous dialogue, more regular client surveys, focusing on client surveys. वो important था. Focusing on client surveys, client questionnaires. Secondly, जो विजिटर्स है उनको हम यूजर्स में कैसे कन्वर्ट करें. ये जो लाइन थी वो मुझे बहुत ज्यादा सेक्सी लगी, वो अच्छी लाइन थी. More regular client service focusing on what they are likely to be most concerned about need to be undertaken. TT4U must remember this personalized approach is not just about what is delivered, but how it is delivered, how proactive TT4U is with its clients. TT4U's website should also help develop relationship with clients by getting them to register or perhaps subscribe to a particular content. The website could provide a chat or messaging option. ठीक है. As well as TT4U's website, other methods which could be developed include newspaper groups, business blogs. Newspapers would keep clients interested by highlighting the new developments with the cloud, which are linked to the services which TT4U provides. ये अच्छा point है. That news groups and business blogs. This is a very good point. Providing services which can only be accessed by clients, for example, extranets, again, will also help generate loyalty. ठीक है. Again, it is important that these are tailored to what is important to clients. ठीक है, ये वाला point थोड़ा okay है. TT4U needs to consider how proactive staff are. TT4U needs to consider TT4U needs to consider how how proactive staff are in dealing with client concerns, how quickly they. Oh भाई, ई मार्केटिंग की, लेकिन ई मार्केटिंग के नाम पे स्टाफ कैसे आएगा यार, ये मुझे नहीं क्लिक होता, ये मुझे एग्जाम हॉल में भी क्लिक नहीं होता. How quickly they respond with clients contact, and also how easy it seems to be
for them to answer client queries. A business offering IT expertise needs to ensure that knowledge and awareness which all its staff have is clear to clients. TT4U should also emphasize the existing knowledge it has of existing client systems at the selling point for helping them to develop effective cloud computing service offerings. तो ये वाला मैंने लिखा है कि हमारे इफेक्टिव सेलिंग पॉइंट्स होने चाहिए, लेकिन वो मैंने ऐसे लिखा है ना कि हमें एडवर्टाइज करनी चाहिए वो सारे सेलिंग पॉइंट्स हमारे। सेकेंडली, हम जो प्राइसेस भी इनको कम चार्ज कर रहे हैं वो भी हमें एडवर्टाइज करना चाहिए। हम लोग प्राइसेस क्यों कम चार्ज करेंगे? क्योंकि हम लोग एक कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में सस्टेन करेंगे, ऐसा मैंने इस पॉइंट में लिखा हुआ है, इसके वजह से, ठीक है ना। पोस्टिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज जो हम लोग प्रोवाइड करते थे, ये हम लोग बेसिक सर्विस को प्रोवाइड करते थे। तो अभी हमारे नए क्लाइंट्स को हमें वो अवेयर करके देना पड़ेगा कि देखो भाई, अब हम लोग एक नए मतलब एक नए बिजनेस के अंदर घुस रहे हैं, ऐसा हमें उनको बताना पड़ेगा। ये मैंने लिखा है। तो दिस वाज माय टास्क 2 का परफॉर्मेंस। आई फील इट्स क्वाइट ओके ओनली, मतलब ऐसा कुछ ज्यादा सेक्सी नहीं है। इसमें भी मैं अगर कितने 14 मार्क का, तो मैं अपने आप को 7 ही दूंगा। मैं ज्यादा 7 पता नहीं, 7 भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं 6 दूंगा शायद, पता नहीं यार, मजा नहीं आया एक्चुअली लिख के। टास्क 2, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का टास्क 1 ओके था, टास्क 2 नॉट सो गुड, नॉट सो गुड, ठीक है, अभी ये ठीक है।